Yeah, okay. So the question given was, consider the set of processes with arrival time in milliseconds, CPU burst time in milliseconds, and priority shown below. The higher number represents the higher priority. Some processes are given, arrival time, burst time, and the priority for the processes is given. If the CPU scheduling policy is priority non-preemptive, calculate the average waiting time and the average turnaround time. Okay. So, have you solved this question? Nitesh, sorry, Nilesh, Nishchay. Yes, ma'am. Yes. So turnaround time क्या आया फिर? What was the average turnaround time? 8.8. Average turnaround time 8.8. Okay. And average waiting time was? Riddhi? 4.8. 4 point. 4.8. Okay. Any different answer? Anyone? 8.2 and 5.2. 8.2, 5.2. Okay. Yes, ma'am. 8.2, 5.2. तो फिर रिद्धि 8.8, 4.8 है कि 8.2 है? So let us verify. So the question given for the priority scheduling, the scheduling algorithm here we are using is priority with the non-preemption, right? Now anyhow we have to calculate the waiting time as well as the turnaround time, average turnaround time. So we can use here our regular formula for calculating the average waiting time. It was turnaround time minus burst time. So in some previous lectures I have explained कि अगर प्रिमिटिव मेथड रहता है, either it is in SJF और इन प्रायोरिटी बेसिस, वहाँ पे मैंने आपको ऐसा बताया था कि अगर प्रिमिटिव है तो उसके लिए आप एक दूसरा फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो यूज करो. बट द थिंग इज व्हेन वन ऑफ योर फ्रेंड ओमकार ने जब मेरे को कुछ डाउट्स के लिए पूछा था, तब भी मैंने देखा, फिर बाकी के और 4-5 भी एग्जाम्पल सॉल्व किए, जो हमारा रेगुलर फॉर्मूला है वो भी उसमें अप्लाई होता है. बट द थिंग इज व्हेन इट इज आस्क्ड ओनली टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम, जब सिर्फ वेटिंग टाइम कैलकुलेशन की पूछा जाए ना, तब वो आप नया वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वेर यू डोंट नीड एनी कैलकुलेशन ऑफ टर्न अराउंड टाइम, इजंट इट? आप डायरेक्टली फिर वो फॉर्मूला से आपका ग्रैंड चार्ट से आप क्या कर सकते हो, इमीडिएटली वेटिंग टाइम निकाल सकते हो, देन यू कैन कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम. बट the thing is where you have, it is already asked to calculate the turnaround time also and then waiting time also, then आप regular formula use करके भी आप आपका waiting time निकाल सकते हो. ठीक है. सो बस एक याद रखना, जो मैंने रिसेंट लेक्चर्स में आपको कुछ बताया हुआ था कि न्यू फॉर्मूला से ही आपको प्रिमिटिव में निकालना है, इट इज नॉट लाइक दैट. द थिंग इज why we have used the new formula, because so that we should not there is no need to calculate the turnaround time, you can directly jump to calculating the average waiting time, only the thing is that. Okay, so let us continue. First of all we have to draw a Gantt chart, right? Now it is a priority scheduling, that means we have to consider the priority of each and every process, but arrival time is given for each process, so we have to consider arrival time also. So at 0 millisecond only P1 process has arrived, so P1 will get the CPU access, and the burst time for the P1 is 4. Now this problem is non-preemptive. Non-preemptive means we cannot take away the CPU from the process, right? So P1 will get the entire access and it will execute for 4 milliseconds. Burst time is given 4. So P1 will be executed up to 4. Now after this, up to 4 milliseconds Can in you the please ready move the queue. page, ma'am? Right side. Sorry. Okay. Yeah. Now is it Thank you. visible, right? Yes, ma'am. Huh. Yeah. So up to 4 milliseconds, the remaining processes has arrived in the ready queue. 1, 2, 3, 4. ये 4 milliseconds में P2, P3, P4 and P5 processes have arrived in the ready queue. इसका मतलब now we can jump to the priority column. मतलब यहाँ से अब हम directly analysis कर सकते हैं.
जब पहला प्रोसेस आया था एट 0 मिलीसेकेंड, वी कैन नॉट कंसिडर दिस प्रायोरिटी बिकॉज एक ही प्रोसेस था, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू कंपेयर. ऑल्सो जब ये आया भी इमीडिएटली एट 1 मिलीसेकेंड्स, दूसरा प्रोसेस आया इमीडिएटली, तीसरा प्रोसेस आया, बट द थिंग वाज कि ये नॉन प्रिम्प्टिव था, तो बीच में से हम इसको इस P1 प्रोसेस को प्रिम्प्ट नहीं कर सकते थे, एंड दैट इज वाई वी हैव कंटिन्यूड दिस P1 प्रोसेस, राइट. सो अप टू 4 milliseconds P1 will execute. Now we have P2, P3, P4, P5, and all are waiting for the CPU in the ready queue. Now what we can do is, now we have to compare this one, and given uh, the given thing is higher number represents the higher priority. So यहाँ पे higher number है 5, right? We have two processes with the same priority. We have two processes with the same priority. If we have two processes, more than one process with the same priority, then we have to implement the FCFS scheduling algorithm, right? Now FCFS में क्या होता है? First come, first serve. Now again we have to look back into the arrival time, who has arrived earlier. So P4 have arrived earlier at 3 milliseconds and P5 at 4. So we can consider P4, we can assign P4 CPU, right? Then P4 will be executing for 5 milliseconds. So up to 9, P4 will be executing. So this is done. So after that, we know with the equal higher priority, we have P5 process. Now P5 will come into the CPU. It will run up to 2 milliseconds. That is up to 11 milliseconds. Now after this, higher number represents the higher priority. Means now P3 is having the higher priority than P2. So P3 will be coming into the CPU, and then it will execute for 1 millisecond, which is the burst time given for this respective process up to 12. Okay, so P3 भी हो गया. Now who is remaining? Only the P2 process is remaining. Now P2 will get the access of CPU, which will run up to 3 milliseconds. So 12 plus 3 will be 15. So up to 15 milliseconds, all processes will be executed. Now, right? So now this is what the Gantt chart for this processes. Now, write down the chart: process ID, arrival time, burst time, priority, completion time, right? Okay, P1, P2, P3, P4 and P5. ठीक है, तो अभी अराइवल टाइम इज 0, 1, 2, 3, 4 है. कुछ गलत हुआ क्या? हाँ, वो एक साथ 2-3 एक साथ. okay. Then burst time is 4, 3, 1, 5, 2, and priority is 2, 3, 4, 5, 5. Okay, चलो completion time बताओ for P1 from Gantt chart. 4, 4. For P2 9. है, P2 और P2 मैम 15. 15, right. For P3 it is 12. 12. Yes. P4 P4 9. 9. P5 is 11. right. अब क्या करना है? पहले टर्न अराउंड टाइम, देन वेटिंग टाइम निकालते हैं. ओके, टर्न अराउंड टाइम फॉर्मूला क्या है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. Arrival time. Yes, completion time minus arrival time. So completion time we have, arrival time we have. 4 minus 0 will be 4, 15 minus 1 will be 14, 12 minus 2 is 10, 9 minus 3 will be 6, 11 minus 4 is 7. Okay, Yes, now ma'am. waiting time formula is turnaround time minus burst time. Burst time. Yes, exactly.
So turnaround time we have calculated, minus burst time is given. So 4 minus 4 will be 0. 14 minus 3 will be 11. 11, It is 9. 9, 6 minus 1, 5 is 1. 7 minus 2 is 5. 5, Right. Right. So average turnaround time is 4 8.2 plus milliseconds. 8.2. plus 10 plus 6 2. plus 7 is कितना 8.2. 8.2. 8.2. Average waiting time is 0 plus 11 plus 9 plus 1 plus 5. 5.2 5.2. 5.2. Okay. So Riddhi, is it clear? कहाँ mistake हुआ था? आपने Ma'am, actually some P5 wrong process. values in the question. Oh, okay. So Wrong values लिखे थे. Okay. Now I got the right answer. okay, then Thank that is you, okay. ma'am. I thought P5 process you might have taken first. Chalo. So this is clear, right? Priority non-preemptive scheduling algorithm. You have already solved this. Very good. बहुत सारे लोगों के आंसर्स भी सही है. चलो अभी थोड़ा सा गेट लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं और फिर कॉमन एग्जाम्पल जो अपने मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा है वो देखेंगे. सॉरी प्रायर आखिरी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखना है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. Consider a set of processes with arrival time in milliseconds, CPU burst time in milliseconds, and priority 0 is the highest priority shown below. None of the processes have input output burst time. मतलब कोई भी बीच में context switching वगैरह नहीं हुआ था. Process ID is given, arrival time is given, burst time is given, and the priority is mentioned. The average waiting time in millisecond of all the processes using primitive priority scheduling algorithm. Now this is what the fact which I was talking earlier. Okay, कि यहाँ पे अभी बोला है सिर्फ average waiting time निकालने के लिए, है ना? So we need only waiting time. We don't need to calculate turnaround time. So we can skip the step of calculation of turnaround time by using that formula. Which was the formula? Total waiting time minus arrival time minus number of millisecond process executed earlier. Do you remember this? We have discussed this formula in the earlier lectures, right? So that formula you can implement in such cases where you have to calculate only waiting time. So no need to calculate completion time, no need to calculate your turnaround time. Directly you can jump to the one formula. तो ऐसे वाले फॉर्मूला जो है ना, जैसे गेट के आपको शॉर्ट टाइम में आपको फास्ट सॉल्व करना रहता है, उस केसेस में ये वाले फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे. अभी इधर आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन अगर इस तरीके के अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल में आते हैं, वहाँ पे आप कैलकुलेट करो डिटेल में तो भी चलेगा. यही एक ही फॉर्मूला कैलकुलेट करके फॉर्मूला से निकालोगे तो भी चल जाएगा. ठीक है. सो नाउ चलो गैन चार्ट सब बताएंगे अभी. आई होप एवरीवन इज राइटिंग इनटू द नोटबुक, क्योंकि कैमरे किसी के भी ऑन नहीं है. आई एम होपिंग आंसर्स दे रहे हो, तो मैं बस ध्यान रख रही हूँ कि आपने ऑन किया, आपने लेके बैठे होगे नोटबुक वगैरह. चलो. सो अराइवल टाइम एट 0 मिलीसेकेंड P1 अराइव्ड. ठीक. नेक्स्ट 5 मिलीसेकेंड तक दूसरा कोई प्रोसेस, हाँ यहाँ 2 मिलीसेकेंड पे आया हुआ है. 1 2 मान लो यहाँ पे 2 मिलीसेकेंड्स पे द नेक्स्ट प्रोसेस अराइव्ड P4 which has the priority 1. Now we know that 0 is the highest priority, मतलब smallest value को greater priority है. That means जो P1 run हो रहा था it has the priority 2, and now at second millisecond P4 arrived with the priority 1, means P4 have the highest priority than the P1. So we can preempt this P1 process because this is a preemptive priority scheduling algorithm is applied. So P1 can be preempted, P1 should be preempted, and now P4 will be going to the CPU, right? So for P4, 10 burst time is there, right? But at 5 millisecond, P2 process arrived. At 5 millisecond P2, अभी 3 4 5 मान लो यहाँ पे 5 millisecond पे P2 arrived.
with the priority 0 means obviously P4 से ज्यादा प्रायोरिटी किसको है? P2 को है. That means we have to preempt the ongoing process and we have to take away the CPU from the P4 and now P2 will be coming into the CPU for the further execution. अभी 0 है मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी प्रोसेस को है, isn't it? So now P2 will be executing for the entire burst time, मतलब उसका जितना भी burst time है वो पूरा execution होगा, क्योंकि ये प्रायोरिटी बेस्ड प्रिमिटिव एल्गोरिदम है यहाँ पे अप्लाई किया हुआ. मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस अब सीपीयू में आ चुका है. दैट मीन्स दिस P2 प्रोसेस विल एग्जीक्यूट फॉर इट्स एंटायर बर्स्ट टाइम व्हाटएवर इट रिक्वायर्स. सो नाउ वी रिक्वायर 28 मिलीसेकेंड्स. सो 28 प्लस 5 मान लो यहाँ तक लेती हूँ मैं 33, राइट. अप टू 33 P2 will be executing. Now P2 has completed its execution. उसके बाद up to 33 milliseconds. Now in the ready queue, everyone is available. All processes are available in the ready queue now. क्योंकि last 12 millisecond पे P3 आ चुका है. मतलब 33 milliseconds होने तक सारे processes are waiting in the ready queue. So now we can compare the priorities of all the available processes. Now we have 2, 3, 1, 4. Which one will have a highest priority? P4, right? So now P4 should, yes, P4 will be coming to the CPU for further execution. P4 has already executed earlier. कितना? Yes, 3, 4, 5. Total 3 milliseconds execute हो चुके थे, जिसमें से बचे हैं 7. So up to 40 milliseconds P4 will execute. Now this is done. Now after this, किसका नंबर है? Now P1. yes, the priority is higher priority is for P1. So P1 will be coming into the 49, 40 to 49. हाँ, तो P1 भी earlier execute हुआ है for 1 and 2 milliseconds. तो यहाँ पे कितना? 9. तो 9 बचा हुआ है execution. Up to 49 P1 will be executing. Now ये भी हो चुका. अब 3 and 4 बचे हैं, जिसमें से higher priority for P3. P3 earlier execute हुआ है क्या? नहीं. No, ma'am. Yes, we require burst time is 2. 51. Correct जा रहे हैं ना? Yes, ma'am. हाँ. So 51 तक P3 हो चुका. Now P5. 55 तक. 16 है burst time. Oh, sorry. मैम तो 51 plus 16. 67. मैम 67. हाँ. Yeah, 67, ma'am. हाँ 67. ठीक है. So this is the Gantt chart for this problem. चलो कैलकुलेट करोगे फटाफट. कंप्लीशन टाइम क्या बोला? नहीं, अपने को तो सिर्फ बोला है वेटिंग टाइम, राइट? यस मैम. हाँ, तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला क्या बताया मैंने? वेटिंग टोटल वेटिंग टाइम. इफ वी ओनली हैव टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम, जहाँ पे टर्न अराउंड निकालने की जरूरत नहीं है, तो बस क्या करो, टोटल वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम माइनस नंबर ऑफ previous execution yes milliseconds executed. Previously executed. ठीक है, previously executed. Okay, so P1 now total waiting time for the P1 is from this Gantt chart 40. yes, P1 40 यहाँ पे final execute हुआ है, तो 40 was the total waiting time minus arrival time of the P1 is 0. Number of millisecond previously executed यहाँ पे execute हुआ है -2. So 40 minus 2 will be 38. 38. ठीक है. अब P2 number of total waiting time for the P2 is 5. Yes, ma'am. Minus arrival time for the P2 is 5. 5. Previously executed P2 नहीं 0. So it will be 0. P3 total waiting time is 49. 49. Arrival time for the P3 is 12. 12. Yes. Then previously executed P3 0. 0. कितना आया? 37.
37. 37. P4 total waiting time 33. Ma'am, P4 33. Yes, arrival time for the P4 is 2 2. and number of previously executed 1 2 3 3 मिलीसेकेंड एग्जीक्यूट हुआ था. Yes, ma'am. हाँ, तो कितना हुआ? 28. Yes. 28. Yes. अब P5 total waiting time for P5 is 51. 51. Arrival time for P5 is 9 And 9. and 0. Right? 51 minus 9 is 42. 42. yes, exactly. Now average waiting time. 29 milliseconds. 39. 29 हाँ? milliseconds. 27. 29. Yes, exactly. है क्या ऑप्शन में है? Yes, miss. राइट? समझ में आया? ये फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे ये क्लियर है? जहाँ पे Yes, ma'am. सिर्फ वेटिंग टाइप आपको निकालने बोलेंगे वहां पे बस ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो. जहाँ पे टर्न अराउंड टाइम ऑलरेडी हम अगर इफ वी आर कैलकुलेटिंग देन यू कैन यूज आवर रेगुलर फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. वो वाला आप यूज कर सकते हो. ठीक है, चलो वेरी गुड. नाउ Ma'am, हाँ बोलो. ma'am, can you show that previous question once whole completely? ये वाला अभी जो सॉल्व किया. हाँ 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 हाँ, लिख के लो. हाँ, नोटबुक में होने चाहिए. यूनिट टेस्ट में मैं इसे जो हमने सॉल्व किए उसी में से मैं कोई एक एग्जांपल पूछूंगी. okay ma'am. Till now we have discussed about the first come first scheduling algorithm, then shortest job first, in which we have primitive, non-primitive types, then priority scheduling algorithm, and now the last one, round robin scheduling algorithm. In this also we have the type we cannot say because the nature of the scheduling algorithm itself is a primitive nature. So this is dedicatedly a primitive scheduling algorithm, but that depends जितना time quantum allocate किया है उससे कम burst time अगर उस process का होगा then it will not be preempted during the execution, it will be executed entirely. Okay, we'll see what is the meaning of this statement. The round robin scheduling algorithm is designed specially for time sharing system. Okay, it is similar to the FCFS scheduling, but preemption is added to switch between the processes. So in this method, each process is assigned a fixed time slot in a cyclic way. One quantum period will be allocated, a fixed quantum period will be allocated to each and every process. So for that particular time period, every process will be executed. Okay, so each and every process will get a chance to execute. So here the problem of starvation will be overcoming. We know the problem of starvation, isn't it? Where in shortest job first or in the priority processes also, the higher priority will get the CPU first and the lower priority will be waiting for the long time and starvation may occur. So here that problem of the starvation will be overcoming. So it is simple, easy to implement and starvation free as all processes get fair share of the CPU. So it is a primitive as processes are assigned CPU only for a fixed slice of time period. But disadvantage of this process of scheduling algorithm is more overhead of the context switching is available. What is the context switching? The prior idea of this context switching I have given in the earlier sessions. Context switching means when we stop any process at any moment because of any reason, because of request of input output devices or any interrupt occur, any miscellaneous thing happen, then in that case we stop the process, right? We stop the process, we move it into the ready queue. So while input output devices will be available to that particular required processes, then in that case from where that process has been resumed, process has been stopped, from that point only the process will continue or process will be resume its execution. तो वो the particular concept है उसको कहते हैं context switching. Now we know that in round robin scheduling each process will get a fixed slot, उतने टाइम में उसका एग्जीक्यूशन होगा.
So if it completes the execution during that allocated time period, then that is well and good. Okay, वहाँ पे वो complete हो जाएगा. But if it requires the more time to execute, then that process have to go back into the ready queue, and according to the, we can say, according to the number, जब अगर सारे processes खत्म हो गए line में, and then if it will after that it will get the number to execute, then again it will come and again it will execute for that particular time slot only. तो वहां पे खत्म हुआ, then that is okay. But if it will not complete at that time period also, then also it has to switch back to the ready queue. Okay, so that is the main concept behind the round robin scheduling, is starvation free process scheduling algorithm बनाने के लिए. तो हाई प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी या शॉर्टेज जॉब वाले पहले जाएंगे, तो लॉन्ग जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है वो वहां पे बाहर वेट नहीं करेंगे. सो दीज ऑल we can say limitations will be overcome into this round robin scheduling. लेकिन because of this context switching, जो यहाँ पे रिज्यूम हो रहा है, पॉज हो रहा है, रिज्यूम हो रहा है, पॉज हो रहा है, उसको मेंटेन करना भी जरूरी है ना. सो इन दैट केस overhead of the context switching is possible in this round robin scheduling algorithm. Let us take one simple example first. Consider the following set of processes that arrives at time 0 with the length of the CPU burst given in the milliseconds, and the time quantum takes as 4 milliseconds for round robin scheduling algorithm. Process ID is given and the burst time is given. Now there is no requirement of priority or nothing. Okay, we just require कि कितना millisecond execute होगा, time quantum कितना दिया हुआ है fixed, because we are using the round robin scheduling algorithm. So यहाँ पे 4 milliseconds है. That means each and every process, whenever it will come into the ready queue, whenever they are waiting for accessing or for getting the access of CPU, they have to wait. They will be execute once they will be allocated the CPU, they will be executed for 4 milliseconds only. Then the second process will get the chance. Now it will execute for the 4 milliseconds. Then after that, the next process, and then again back the P1 process will be executing. But if the process burst time is less than the time quantum, the static time which is allocated, उससे अगर कम है, then up to that time period only, the burst time अगर less than है ना given time period से, तो वो उतना टाइम ही, जितना 3 टाइम है ना, 3 milliseconds are required for the entire execution. तो 3 milliseconds ही प्रोसेसर जो है या CPU जो है for P2 process will be allocated. After that it will be automatically switched back to the next process. मतलब next process जो भी होगा वो CPU में आ जाएगा. ठीक है, इट डजंट मीन कि फिक्स्ड टाइम स्लॉट अगर अलोकेट हो रहा है और इसका कम है तो बचा हुआ 1 मिलीसेकंड सीपीयू आइडल रहेगा. नो, द सीपीयू विल बी स्विच्ड और वी कैन से द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी असाइंड टू द सीपीयू. सो गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, क्लियर आइडिया आ जाएगा. सो अराइवल टाइम at 0, all processes have arrived at the time 0, so we can consider P1, P2, P3 are waiting in the ready queue, right? Now P1 यहाँ पे FIFO भी होगा क्योंकि फर्स्ट जो आया है उसी को फर्स्ट CPU मिलेगा, बट कितना टाइम मिलेगा that depend upon the given millisecond time period. ठीक है, so now P1 will come into the CPU. Now it will execute up to 4 milliseconds only. Total time required to execute for P1 is 24 milliseconds, from which P1 is executing up to 4. So बचा कितना 20. Now P2 will get the access of CPU. Fine. So 3 milliseconds is the burst time required for the P2, which is less than the time quantum allocated, right? तो यहाँ पे जो है बस उतना ही execute होगा जितना उसको चाहिए. तो up to 7 P2 will be executed. Now P3 will get the chance. Now P3 will come into the CPU. It will execute up to 10 milliseconds. Now P3 has completed its execution. Huh? Now P1. Now only process available in the ready queue is P1 process, right? Even if only the P1 process is waiting in the ready queue, but still context switching will happen. That is the limitation of this scheduling algorithm. Even if only one process is waiting in the ready queue, still that time dividation जो switching होगा वो होगा ही.
ठीक है। तो अब यहाँ पे P1 प्रोसेस आया, नाउ इट विल एग्जीक्यूट फॉर नेक्स्ट 4 मिलीसेकेंड, जिसमें से ये गया, अब यहाँ पे बचा 16। नाउ अगेन कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा और फिर से P1 आएगा, फिर यहाँ पे बचा 10, इसमें से 12 बचा, फिर आएगा वही, मतलब कंटिन्यू होगा। अब कितना यहाँ पे, अच्छा ये उल्टा चला रहा है क्या मेरा, माइनस किया मैंने 18 ना, Yes, ma'am. हाँ 18 के बाद आएगा यहाँ पे 22। 22, हाँ अब 26, 26, हाँ and 30, के बाद 30 30. हो गया, नहीं Yes, ma'am. 34 तक आएगा कि 30 तक ही हो गया पूरा? I think होना चाहिए, पूरा हो गया I think. देखो ना टोटल 4, मैम 5 6 ना 6 हो जाना चाहिए पूरा. Yes, ma'am. हो गया 30 हो गया तक मैम हो गया ना, हाँ चलो। सो इन दिस वे द ऑल प्रोसेसेस विल गेट द एक्सेस ऑफ सीपीयू। तो यहाँ पे स्टारवेशन तो किसी का नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर प्रायोरिटी दी रहती, all processes has arrived at 0 milliseconds only and priority is mentioned and the priority for P1 process is higher, यहाँ पे 1 2 3 रहता, lowest number represents the highest priority, अगर ऐसा रहता तो P1 will first get the CPU और 28 milliseconds तक P1 एग्जीक्यूट होगा, फिर उतने टाइम तक P2 and P3 has to wait outside of the CPU। सिर्फ 3 मिलीसेकेंड्स का उनका काम था, फिर भी उनको वेट करना पड़ेगा, राइट। सो वो यहाँ पे ओवरकम हो रहा है, स्टारवेशन यहाँ पे नहीं होगा, that is the main thing। but वही है कि even if one process is remaining in the ready queue but still context switching will happen, उसके लिए जितना utilization of processor होगा वो होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेसेस कम है और इसका टाइम पीरियड उतना भी ज्यादा नहीं है, 28 कंटेक्स्ट स्विचिंग बस 4-5 बार हुआ या 5-6 बार हुआ, बस उतना ही। बट जहाँ पे मोर बर्स्ट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोसेस, देन इन दैट केस वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन सीपीयू का जो थ्रूपुट है वो ज्यादा, थ्रूपुट नहीं कह सकते बट प्रोसेसर जो है ज्यादा एक ही बेवजह क्या हो रहा है, एक ही प्रोसेस का तो एग्जीक्यूशन कर रहा है, फिर भी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है। That is the limitation behind this, okay? So this concept is clear, right? So we can solve one example based on this. Consider the set of 5 processes whose arrival time and the burst time are given below. Process ID given P1, P2, P3, P4, P5. Arrival time is mentioned and the burst time is mentioned. If the CPU scheduling policy is round robin with the time quantum is equals to 2 units, calculate the average waiting time and the average turnaround time. The formulas will be same, okay? पूरे scheduling algorithms के लिए formulas आपके same है, तो उसका कुछ टेंशन नहीं है। बट कौन से मेथड में क्या करना है वो बस याद रखो, इट इज वेरी इजी, 10 मार्क्स तो आसानी से मिल जाएंगे। चलो, नाउ टेल मी द गैंट चार्ट फॉर दिस प्रोसेस। तो P1 0 से 2, 0 से 2 हाँ. हाँ, तो 0 मिलीसेकेंड्स पे हु अराइव्ड P1, राइट। Yes, ma'am. और क्या है अप टू 2 मिलीसेकेंड्स का ही दिया ना, तो इसमें से बचा 3। चलो आप लोग आपके इसमें ड्रॉ करो नोटबुक में, देखते हैं किसका सही आता है, मेरा या आपका या दोनों का भी। P2 1 पे आया लेकिन प्रायोरिटी दी नहीं है। P3 Yes. P3 कोई एक जन मेरे सॉल्विंग पे भी ध्यान रखो, गड़बड़ी कर देती हूँ मैं भी। P5 9 बचा 1, देन Yes, ma'am. It's right. हाँ सॉरी,
again P1 ना हाँ अभी कौन अभी अभी नेक्स्ट है P1 राइट. P1 11 हाँ P1 अप टू 11 बचा एक, फिर P2 आएगा, फिर यहाँ पे अप टू 12 हो जाएगा. देन वो इज P5, रिमेन P5 P5, और 1, अप टू 13 एंड रिमेनिंग भी P1 P1, 14. राइट. चलो, so process ID, each and every time you write down this everything. हाँ, क्योंकि वही आदत आपकी एग्जाम में लग जाती है. शॉर्टकट लिखोगे, एग्जामिनर को अगर समझ में नहीं आया then marks will be cut. P1, P2, P3, P4, P5. रिद्धि कितना आया एवरेज वेटिंग टाइम? Arrival time is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3. So now completion time, turnaround time and waiting time. ठीक है. Completion time for P1 is? Completion time for P1 is 14 14. Completion time for P2 is 12. P2 yeah, 12 12. P3, 5. 5 yes P4, P4 7 7. P5, 16. 16 नहीं 16 और नहीं रे 13. 13 13. 13. हाँ ये मेरा ही मिस्टेक होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है. 13 है वो. हाँ ठीक है. अभी टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, राइट. कंप्लीशन टाइम इज 14 minus 0 is 14, 12 minus 1 is 11, 5 minus 2 is 3, 7 minus 3 is 4, 13 minus 4 will 9 be 9. 9 Okay. Waiting time is turn around time minus Burst time. burst time, Burst time right. So 14 minus 5, 9 11 minus 3, 8 3 minus 1, 2, 4 2 minus 2, 2, 9 minus 2 3 will be 6. 6 चलो. The given question is calculate average waiting time and average turn around time. चलो बताओ. 14 plus 11 5 plus 3 मैम plus एवरेज वेटिंग टाइम शायद 5 होगा ना 5 मिलीसेकंड ना क्या? मैम एवरेज वेटिंग टाइम एवरेज वेटिंग टाइम. हाँ देखते हैं ना, अभी मैंने कहाँ कैलकुलेट किया अभी तक. 2 plus 2 plus 6 डिवाइड बाय 5. 27 by 6 27 by 5 actually 27 by 5 average waiting time is equal to 5 5.4. 5.2. 5.2. और what is 5.4. turn around time? 5.4 ma'am Ma'am, 5.4 5.4 milliseconds. average waiting time और एवरेज टर्न अराउंड टाइम 8.2. 8.2 yes कितना आया इधर? टोटल कितना आया है? 41 by 5 41 divided by 5. ठीक है. 8.2 मिलीसेकेंड एंड 5.4 मिलीसेकेंड. ठीक है. yes ma'am सबका सेम Yes, आंसर है. ma'am. हाँ मैम Yes, ma'am. Very good. So I'm not taking I'm taking only one example on this round robin scheduling algorithm, because this question, the next question is asked in the university examination of Mumbai University for 10 marks. You just write down this question, which includes you have to use all the scheduling algorithms like FCFS, SJF, non-primitive priority, and the round robin with the quantum period 5 unit. Okay, and this question is asked for 10 marks. तो इतना सब मिला के 10 मार्क्स के लिए आता है. कभी कभी दो के कॉम्बिनेशन में भी पूछते हैं, किसी कोई दो ही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी पूछे जाएंगे, लेकिन कभी कभी ये सब भी पूछते हैं. सो अपना टाइम मैनेजमेंट उतना रखना और प्रॉपर गैंट चार्ट रखना, बिकॉज एवरी we can say for every scheduling algorithm there is a different Gantt chart, so you have to draw a very proper diagram, because on that diagram only you will get the exact answers, right? So the question is, assume the following processes arrive for execution at the time indicated and the length of the CPU burst time given in milliseconds. So the jobs, total 5 processes are given, burst time is mentioned, priority is there, and the arrival time is there. For the above process parameters,
find average waiting time and average turnaround time for the following scheduling algorithms: FCFS, SJF, non-preemptive priority, and round robin. Assume quantum equals to 5 units. This question was asked for 10 marks. So take it as a homework. We will solve this question in the next session. Ma'am, SJF is also non-preemptive, no? Yes, SJF is non-preemptive. Okay, ma'am. जहाँ पे when it is not mentioned anything, then by default you have to consider the non-preemptive only. Actually यहाँ पे SJF non-preemptive भी होगा and priority नहीं, लेकिन कॉमा इधर दिया है, मतलब वो SJF by default you have to consider non-preemptive scheduling algorithm only. Okay. And they have asked to calculate turnaround time. That means you can use the regular formula to calculate waiting time. No need to use that three parameter wala formula.